Hi, dear friends. Welcome once again to my YouTube channel PDS Classes. Today, we are going to discuss the first chapter of First Flight, A Letter to God. Hey friends, क्या कभी आपने भगवान को लेटर लिखा है? Do you know his address? Do you think God replies you when you send him letter? We are going to discuss all such questions in this chapter, A Letter to God, whose central character is Lancho, a farmer. Friends, this story is written by G. L. Fuentes. At first, we are going to discuss the central plot of the story, then the storyline. At first, we are going to discuss the plot of this story. दिया गया फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आपकी स्टोरी की थीम को रिप्रेजेंट करता है द अनक्वेश्चनेबल बिलीफ ऐसा विश्वास जिसके ऊपर न तो कभी कोई क्वेश्चन मार्क लगे और न ही उसे किसी भी तरीके से तोड़ा जा सके सच बिलीफ इज नोन एज अनक्वेश्चनेबल बिलीफ अगर हम किसी पर्सन पर अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें उसके ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए वह बिलीफ फर्म और स्ट्रांग हो इतना स्ट्रांग हो कि उस विश्वास को कोई न तोड़ सके सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज टोल्ड बाय दिस स्टोरी The central character of this story is Lancho. You can see this word Lancho. You can consider him the hero of your story, the protagonist of your story. He is a farmer. किसान है वह. Actually, his crop is destroyed by the hailstones and he asked for 100 pesos from God. Look at the second point once again. Lancho, the farmer who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking help, 100 pesos, after discovering that his entire crop has been destroyed by a terrible hailstorm. Lancho believes that God exists. That's why he writes a letter to God and asks for help. Next point is, although he gets a partial amount, but he remains ungrateful as he has not received the whole amount he has requested. Lencho has asked for 100 pesos. He has got 70 pesos. The 30 pesos are not there. He thinks that the 30 pesos have been kept by post officials. उसका मानना है कि भगवान ने तो उसे 100 पीसोज ही भेजे हैं मगर बीच में ये जो 30 पीसोज हैं ये पोस्ट ऑफिस वालों ने रख दिए हैं तो ही इज नॉट ग्रेटफुल टू गॉड और ही इज नॉट ग्रेटफुल टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहता हूँ ये जो 70 पीसोज हैं यह पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने अंडर द गाइडेंस ऑफ पोस्ट मास्टर कलेक्ट किए हैं और अननोन टू लेंचो यह अमाउंट उसे दिया गया है बट ही इज नॉट ग्रेटफुल टू द पोस्ट ऑफिशियल्स उल्टा लेंचो उनके ऊपर ब्लेम लगाता है द नेक्स्ट पॉइंट he thinks that the post office authorities have stolen the remaining amount. That's why he writes another letter. ये सेकंड लेटर होगा वो गॉड को वापस लिखता है कि भगवान इस बार जो पैसा भेजो डज नॉट सेंड इट थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिशियल्स आर अ बंच ऑफ क्रुक्स वो डिसऑनेस्ट पर्सन है बेईमान है तो मेल के थ्रू ये पैसा मत भेजना इस स्लाइड में हम स्टोरी एनालिसिस स्टोरी के मेन एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे आपको बड़े ध्यान से इन स्टोरी पॉइंट्स को याद रखना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें लेट अस मूव फॉरवर्ड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टोरी इज अबाउट लेंचो you have to remember the name of this character who is the hero of your story. He is a farmer of limited means. Limited means का मतलब होता है who has
लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पर हम उसे फार्मर की फॉर्म में देखते हैं। एंड एट प्रेजेंट हिज फील्ड आर ग्रोवन विथ कॉर्न क्रॉप। ही अर्न हिज लिविंग बाय फार्मिंग हिज फील्ड। वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, ही इज लिविंग हैप्पीली। व्हेन द स्टोरी बिगिंस, ही इज एक्सपेक्टिंग a good amount of rainfall. Second point, he had an unshaken faith in God. Two words you can remember. The first word is unshaken faith, ऐसा विश्वास जिसको हिलाया न जा सके. And the second word may be unquestionable faith, ऐसा faith जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क न लगे. लेंचो का मानना है कि भगवान हमेशा इनोसेंट पीपल की हेल्प करता है, और जैसे ही लेंचो की क्रॉप हेल स्टोन से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो भगवान को लेटर लिखेगा एंड ही विल डिमांड हेल्प फ्रॉम गॉड. नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट. दिस थर्ड पॉइंट फॉर्म्स अ क्वेश्चन. What was the expectation of Lencho and what did he get? Once he expected good rainfall for his cornfield. When the rain started, he moved out to feel the raindrop. और उसने अपने बेटे को स्टेटमेंट दिया. वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है. Look at the sentence which is written in double inverted commas. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5-cent pieces. दो बातें ध्यान में रखनी है. बड़ी बारिश की बूंदों को उसने 10-cent pieces से कंपेयर किया और छोटी ड्रॉप्स को उसने 5-cent pieces से कंपेयर किया. He was extremely elated, joyous and happy when the rainfall started. So according to his expectation, the rainfall was going to take place. What was the ultimate result? Did the rainfall continue according to his expectation? Look at the point number 4. The happy or the joyous mood of Lencho convert into despair or disappointment. Why this has happened? Look at the point 4. The rainfall turned into hailstones. यहाँ पे एक वर्ड आया है हेल स्टोन्स. ये वर्ड आपको याद रखना है. जब आकाश से ओले गिरने लग जाएं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, तो इनको हेल स्टोन्स कहते हैं. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स. Initially, the rain drops were falling, but when it turned into hailstones, everything was destroyed. Look at the first line. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if it was covered with salt. Lencho stood in the center of the field. He was looking at his destroyed field. और यहाँ पर उसने एक रिमार्क किया है फ्रेंड्स, जो आपको याद रखना है. इससे क्वेश्चन भी बनता है. क्या है वो रिमार्क? देखिए. अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इस वर्ड का मतलब, इस लाइन का मतलब निकलता है, इफ द field was destroyed by insects, there might be something left in the field. But the hailstones haven't left anything in the field. उसे लगता है ये जो नुकसान हुआ है इसमें कुछ नहीं बचा है. अगर इंसेक्ट्स का एक अटैक हो जाता तो भी शायद कुछ बच जाता फील्ड्स में. तो ही इज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड बाय द सिचुएशन. Let us move to our next slide to see the remaining part of the story. Now, what is the last hope for Lencho? Now, Lencho thinks that in this difficult time, only one person can help him, that is God. Therefore, when he lost all his hopes and he and his family were on the verge of starvation, यहाँ पर दिए हुए वर्ड स्टारवेशन का मतलब निकलता है हंगर. जब वो भूखमरी की हालत में होते हैं तो ही लुक टुवर्ड्स द गॉड फॉर हेल्प एंड ही रॉट अ लेटर टू गॉड.
इस लेटर में उसने गॉड से डिमांड की है दैट ही शुड बी गिवन 100 pesos so that his family can survive for the rest of the year. Look at the sixth point. When this letter reaches to the village post office, then the postman who looked at the letter first, what was his reaction? The postman went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. तो आपको ये ध्यान रखना है, इनिशियली everybody in the post office laugh, but the postmaster, the head of the post office, he think that the faith of Lencho should be maintained. So he decides to collect the amount from himself and his employees and ultimately sends 70 pesos to Lencho. Look at the seventh point, his deep faith. Whose deep faith? It is the deep faith of Lencho. It impressed the postmaster and he decided to help him. He collected 70 pesos to help him. यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड की, पोस्ट मास्टर ने उसको कैसे भी कलेक्ट करके 70 पीसोस भेजे। ये जो रिमेनिंग 30 पीसोस हैं, लेंचो को ये लगता है कि दे हैव बीन केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिशियल्स। उसे लगता है भगवान ने तो पूरे भेजे हैं पर इनको पोस्ट ऑफिशियल स्टाफ ने रख दिया है। Look at the eighth point. On getting letter and the amount, Lencho got angry. Eighth point फिर आपका एक क्वेश्चन फ्रेम करता है। इस पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है, why did Lencho write second letter to God? When Lencho receives 70 pesos, he thinks that the amount of 30 pesos have been kept by post officials. तो वो गॉड को सेकेंड लेटर लिखता है एंड ही टेल्स दैट गॉड शुड नॉट सेंड दिस अमाउंट थ्रू मेल एज द पोस्ट ऑफिशियल्स आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये वर्ड आपको याद रखना है, CROOKS। इसका मतलब निकलता है डिसऑनेस्ट पर्सन्स। तो ये है आपकी मेन स्टोरी। नाउ हम करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेक्टर बनेगा लेंचो का एंड सेकंड इज अबाउट द पोस्ट मास्टर। लेंचो इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अनशेकेबल फेथ और यू कैन कॉल अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। ऐसा विश्वास हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। अ पर्सन हु कंप्लीटली बिलीव्ड दैट इफ यू आर इन ट्रबल, you ask help from God, obviously God is going to help you. The second point, that he always believed that God helps the needy in distress. Here the word distress means trouble. दुख और तकलीफ में अगर आप भगवान को पुकारते हो तो भगवान मदद करता है, ये उसका फर्म बिलीफ था। Looking at the character of Lencho, we can conclude people like him are rare in reality. रेयर का मतलब निकलता है बहुत कम। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनका इतना फर्म बिलीफ हो। अदरवाइज most people consider that God is an abstract idea. We can merely join hands to God, but we do not have courage to write a letter to God. Fourth point, naive and unquestioning. नेव वर्ड का मतलब निकलता है वह जो अपने मन की बातों को एक्सप्रेस कर दे। तो लेंचो ने अपनी मन की बातों को लेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया एंड सेकेंडली ही वाज अनक्वेश्चनिंग एज ही डज नॉट नो अबाउट द एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसे नहीं पता था कि भगवान की कोई फिजिकल फॉर्म है या नहीं है, बस उसे ये पता था इफ ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर इन डिस्ट्रेस he will be helped by God. कैसा दिखता है भगवान, क्या है, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं था।
Fifth point is good. It is about the reaction of Lencho on getting 70 pesos. क्या उसे सरप्राइज हुआ? आपको लिखना है he was overall not surprised on getting 70 pesos. उसे लगता था he has sent a letter to God and God ने उसकी हेल्प की है और भगवान उसकी मदद करेगा, क्योंकि यह उसका बिलीफ था। तो उसे किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज नहीं है। ही इज अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो एहसान को न माने। हालांकि यहाँ पर लेंचो को पता नहीं था कि ये जो पैसा है ये पोस्ट ऑफिशियल्स ने भेजा है, बट इन सर्टेन केसेस वी कैन से दैट ही इज अनग्रेटफुल। लुक एट द पॉइंट। He is ungrateful in some manner because on seeing 70 pesos he is not happy, but instead complained about the missing 30 pesos, and for this he write his second letter. So he should be grateful कि भगवान ने कुछ तो भेजा है, but he is only worried about the 30 pesos that are missing on the way. The seventh point says he does not trust the present human being. ये एक तरीके की आयरनी ऑफ सिचुएशन को बताता है और इट प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन। बड़ी ही विडंबना है कि हम उस भगवान का विश्वास करते हैं जिसको हमने आज तक नहीं देखा है, बट वी डू नॉट बिलीव इन दोज ह्यूमन बींग्स हु आर अराउंड अस, हु आर रेडी टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू अस। लेंचो की तरफ देखिए, उसे उस भगवान में विश्वास था जिसका एड्रेस न तो उसे खुद पता था, न ही उसने उस भगवान को देखा था। बट वो पोस्ट ऑफिशियल्स जहां से वो लेटर भेज रहा है, उनको वह एक बंच ऑफ क्रुक्स, डिसऑनेस्ट पर्सन कंसीडर करता था, जबकि यहां पर सच्चाई यह है कि लेंचो की मदद उन्हीं लोगों ने की है। तो इट इज जस्ट एन आयरनी ऑफ द सिचुएशन और इट प्रेजेंट द conflict among the human beings. Let us move to our next character, the character sketch of postmaster. Look at the first point. The postmaster represents the people who still believe in helping others. यह करेक्टर ह्यूमन बीइंग की गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, दैट गुड पीपल स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं। Look at the second point. The second point says he sacrifices his own earning just to maintain the faith of Lencho alive. वो ये मानता है कि लेंचो का भगवान में विश्वास अटूट है और वो बना रहे। जस्ट टू मेंटेन दिस बिलीफ, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए he collected 70 pesos and sent it to Lencho. Third point, he is sympathetic fellow, kind fellow and compassionate fellow. After knowing the situation of Lancho, he decided to help him. हम आजकल देखते हैं कि मदद करने वाला व्यक्ति अपने आप को सबसे आगे लाना चाहता है, बट उसने कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी को रिवेल नहीं किया। He sent the amount to Lencho in the name of God. Even the return letter was signed in the name of God. Now there are some important questions that we have to discuss. Friends, आपको इन questions के answers याद रखने हैं। ड्यूरिंग द होल ईयर असेसमेंट में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बोर्ड पर्पज से भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? वी नो वेरी वेल when there is a good amount of rainfall, farmers always expect a good amount of profit. When it was raining, Lencho hoped that अगर बारिश बढ़िया हुई, if the drops are bigger, then each drop is going to provide him 10-cent pieces and smaller drop is going to provide him 5-cent pieces. Since the amount of rainfall was related to his profit, that's why they were just like new coins. He was behaving the way every farmer behaves. Look at the second question. How did the rain change
और what happened to Lencho's field? और में इसका क्या क्वेश्चन बनता है? How did Lencho's hope change to despair? Despair वर्ड का मतलब होता है sorrow, निराशा. Lencho was very happy when he saw that the rainfall is going to take place. But soon the rainfall turned into hailstones. जैसे ही यह चेंज हुआ, the whole crop was destroyed. Lencho felt himself completely ruined. और इसी के कारण his happy mood changed into sorrowful mood and he becomes sad. Look at the question number third. Who or what did Lencho have faith in? Lencho का विश्वास किसमें था? Lencho had unshakable faith in God. भगवान में उसका सबसे बड़ा विश्वास था. And for this purpose he write a letter to God asking for his help. Question number 4. What was the impact of this letter? The impact was that the post officials were melted at this particular faith or belief. They wanted that this faith should be maintained. Among them, they collected 70 pesos and sent it to Lencho. They did not reveal their own identity. They wanted that Lencho should take it as a help provided from God. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised. उसे पता था he had sent this letter to God and obviously God will help him. तो उसके लिए कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं था क्योंकि उसे भगवान में विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही. Question number 6. Who does Lencho think has taken the rest of money? किसके बारे में लेंचो सोचता है कि उन्होंने 30 pesos ले ली? Earlier, Lencho has demanded 100 pesos in his first letter. The post officials collected 70. When these 70 pesos were delivered to Lencho, he thought that the God sent him 100 pesos, but the 30 are missing. He blames the post officials for this particular theft. उसे लगता है ये 30 pesos पोस्ट ऑफिशियल्स ने रखे हैं. अब इस सिचुएशन की आयरनी किया है. आयरनी दोस्तों एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको हिंदी में कहते हैं विडंबना. एक ऐसी परिस्थिति जो इंसान के हाथ में न हो, दैट इज नोन एज द आयरनी ऑफ सिचुएशन. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दैट मैन इज बोर्न टू डाई, आदमी का जन्म मरने के लिए हुआ है, तो इट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अनदर एग्जांपल इज इलेक्शंस डिवाइड अस एंड टेररिस्ट अटैक्स यूनाइट अस. पर इसका मतलब ये तो नहीं है टेररिस्ट अटैक हो, हम तो इलेक्शंस ही चाहते हैं, बट इट इज एन आयरनी ऑफ सिचुएशन दैट इलेक्शंस डिवाइड अस. तो यहां पर जो आयरनी बनती है वो ये बनती है कि लेंचो गॉड में बिलीव करता है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको उसने आज तक नहीं देखा है, बट ही डज नॉट बिलीव इन पोस्ट ऑफिशियल्स जो उसके सामने प्रेजेंट है. इसका मतलब हम ह्यूमन बीइंग में विश्वास उतना नहीं रख पाते हैं जितना हमारा विश्वास भगवान में होता है. दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. Look at the answer. Lencho thought that it is the postmaster or the employees of the post office who had stolen his remaining amount. Question number 7. What did Lencho write in his second letter? ये जो second letter है ये भी उसने गॉड को एड्रेस किया है और उसमें उसने भगवान से कंप्लेन की है. Although God had sent him 100 pesos, but he received only 70. The 30 pesos might have been kept by the post officials. He requests the God to send the remaining amount but not through the mail because the post officials are
a bunch of crooks. I hope you were able to understand the chapter, the theme, and its characters. Please subscribe to my channel and like my videos. Thank you. Jai Hind.